we will be doing that section 405, that is criminal breach of trust. Criminal breach of trust. Okay, so in criminal breach of trust, there should be entrusted with property. It is written, if you read this section, first of all, read this section. It is written, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion. So it is written, entrusted with property. Entrusted with property or dominion. What do you mean by means dominion? Dominion से क्या मतलब है आपको? Dominion means the control over property. Okay, control over property. So that is entrusted with property. So there are formal trust. तो ये formal trust की बात कर रहे हैं. Okay, so they are talking about the formal trust. So this section is talking about formal trust. This section is talking about formal trust. Okay, ठीक है. अब आगे पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use. It is written dishonestly misappropriates or converts to his own use, okay, for his own use. So एक formal trust भी होता है and there will be an informal trust also. अब देखो, जैसे मान लो suppose कि एक formal trust भी होता है, there will be a directive as to how the trust will run or manage. So in formal trust there will be a directions, directive कह लो या direction कह लो, directive as to how the trust will run or manage, So therefore, if trustee does against the directive, he will be liable for under this section, है ना? Therefore, if trustee does or goes against the directives, he will be liable under this section, because there was an entrustment, क्योंकि वहां पे entrustment था, and has disposed of property, then it is breach of trust. Okay, let me give you an example. अब मान लो suppose A ने B को अपनी watch दे दी. Okay, मान लो suppose A gives watch to B. A gives his watch to B. Okay, and B runs away with the watch. ठीक है, तो क्या ये breach of trust है? So is it breach of trust? तो आपको ये एग्जामिन करना पड़ेगा. You have to examine. So what is the requirement? क्या ये breach of trust है? तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा circumstances. Okay, and इसके बाद what is the requirement? What is the main requirement? Okay, what is the main requirement? Main requirement is that there should be entrustment. There should be
there should be entrustment, there should be entrustment, okay, and there should be misappropriation or conversion, there should be misappropriation or conversion, there should be misappropriation or conversion, okay, just wait. All right, so there should be entrustment and there should be misappropriation or conversion, ठीक है. तो ये दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज entrustment and second is the misappropriation or conversion. Misappropriation we have done in 403 and conversion means that to convert it for your own use, कि आप उसको अपने यूज में ला रहे हो, ठीक है. So what is the difference between 403 and 405? What is the difference between 403 and 405? Please tell me all, बताइए all of you, what is the difference between 403 and 405? Please tell me. Okay, yes, देखो, in 403, it is talking about movable property, it is talking about movable property, movable property, and here it is talking about immovable property. They are not defining, because it can be movable or it can be immovable, है ना. इसमें कहीं लिखा ही नहीं है 405 में, they are not defining because it can be, it can be movable or immovable, okay, it can be movable or immovable. Second point over here, there is no entrustment, there is no entrustment, there is no entrustment. इधर entrustment की requirement नहीं है, there is no entrustment is required, whereas over here the entrustment is required, entrustment is required, okay. So बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, इनका actus reus and mens rea दोनों सेम है. So बाकी सब all the things are same, all the things are same, all the things are same, ठीक है. Actus reus of both the section is same. बताइए what is actus reus in this section? What is the actus reus in this section? That is first misappropriation, or conversion, okay. So इसमें भी यही चीज लिखी हुई है, misappropriation or conversion. So the main thing is, so our main question is, what do you mean by entrustment? Okay, what is entrustment? What is entrustment? तो हमारा मेन क्वेश्चन आता है that what is entrustment? Entrustment से क्या मतलब है आपका? Please tell me, what do you mean by entrustment? Entrustment means कि there should be some faith, है ना? There should be trust या faith, there should be trust या faith, there should be element of trust or faith. So out of faith you have given the possession. So out of faith you have given a possession. So out of faith you have given a possession.
of some property, of some property to other person, right? To other person. So you have, out of faith you have given, out of faith you have given the property to some other person. ठीक है, तो अपने पास पोजीशन छोड़ दिया है आपने. You have abdicated the possession. आपने अपना पोजीशन छोड़ दिया है. You have abdicated your possession. आपने अपना पोजीशन छोड़ दिया है. Abdicated is very important word. ठीक है, you have abdicated your possession. Okay, you are not retaining constructive possession also. आप अपने पास constructive possession भी नहीं रख रहे हो. You are not retaining constructive possession also. Constructive possession also. Okay, you are not retaining constructive possession also. आप अपने पास constructive possession भी नहीं रख रहे हो. ठीक है, then only it will be said that you have abdicated your possession. तभी माना जाएगा कि आपने अपना possession छोड़ दिया है. ठीक है, so abdicated means given up. Abdicated means given up. ठीक है, so if constructive possession है, अगर constructive possession है, then there is no abdication. So if there is a constructive possession, if there is a constructive possession, then no entrustment. If there is a constructive possession, then there is no entrustment. ठीक है, and then it is theft. Then it is theft. ये theft होगा, because आपने अपना entrustment, आपने अपना possession छोड़ा ही नहीं. You have retained your constructive possession, and if you have retaining your constructive possession, then it can never be a case of breach of trust. अगर आपने अपना पोजीशन रखा है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो या डायरेक्ट पोजीशन हो, then it can never be a case of breach of trust. It can be a theft. It can be theft. All right, ठीक है. So इससे हमें पता चलता है that theft and breach of trust are mutually exclusive. ठीक है, theft and breach of trust are mutually exclusive. All right everyone, is it clear to all of you? Please tell me, यहां तक समझ में आया आपको? मिस आराधना, भारत, कृष्णा, शिवम, प्राची, निधि. So the main thing which you have to remember is the abdication of possession. ठीक है, क्या आपने अपना पोजीशन छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है? क्या वो पोजीशन आपका डायरेक्ट पोजीशन है या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है? अगर कोई सा भी पोजीशन अपने पास रखा है, then it can never be a case of criminal breach of trust, because in criminal breach of trust there should be the abdication of possession. Abdication मतलब आपने अपना पोजीशन छोड़ देना चाहिए. ठीक है, so all right, I'm going to dictate you a paragraph on it. Please do write it. All right everyone, do write it. For breach of trust, it is essential for breach of trust, it is essential that the victim entrusted that property to the accused
to the accused. Entrusted here would mean entrusted here would mean entrusted here would mean handing over handing over the property handing over the property out of faith out of faith and the possession of the property and the possession of the property and the possession of the property being abdicated. So this is the important word, okay, being abdicated. Thus when the property has been entrusted thus when the property has been entrusted thus when the property has been entrusted, it cannot be a case of it cannot it cannot be a case of constructive possession. It cannot be a case of constructive possession. Once the entrustment was done, once the entrustment was done, thereafter the person to whom the property was entrusted, thereafter the person to whom the property was entrusted uh, either misappropriate the property to his own use or converts it to his own use. ठीक है, next para. If the victim had retained the constructive possession, if the victim had retained the constructive possession, if the victim had retained the constructive possession, if the victim had retained the constructive possession of property, then it would amount to theft. Then it would amount to theft if the accused takes away the property. If the accused takes away the property. All right, everyone. So this is the dictation which I have provided you. All right, everyone. ठीक है. Let's proceed further. So आप सबको समझ में आया? Please tell me, is it clear to all of you? All right. So there will be situations होंगी इसमें ना. Situations are of two kind. So situations
आर ऑफ, वेट इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, सिचुएशंस आर ऑफ टू काइंड्स। ओके, दो तरह की सिचुएशन होंगी, एक होगा फॉर्मल ट्रस्ट, देयर विल बी अ फॉर्मल ट्रस्ट। फॉर्मल ट्रस्ट में क्या होगा कि जो भी एक्ट हुआ है देन चेक करो व्हाट आर द डायरेक्टिव। अगर कोई एक्ट हुआ है then you will check that what are the directives. Okay, then you will check that what are the directives, and if it is a violation then it is a breach of trust. ठीक है, पहले देखो फॉर्मल ट्रस्ट में if there is an act then check what are the directives, what are the directives. ठीक है, and if it is a violation, and if it is a violation, and if it is a violation then it is a breach of trust, then it is a breach of trust, breach of trust। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल ट्रस्ट में कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, देयर विल बी ऑलवेज अ डायरेक्टिव्स इन फॉर्मल ट्रस्ट कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, एंड नेक्स्ट विल बी द इनफॉर्मल ट्रस्ट, इनफॉर्मल ट्रस्ट, इनफॉर्मल ट्रस्ट। इन दिस फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि यू गेव द पोजीशन टू अदर पर्सन, आप अपनी पोजीशन किसी और को दे देते हो, यू गेव द पोजीशन टू अदर पर्सन, यू गेव द पोजीशन टू अदर पर्सन। okay, you gave the position to other person, so he keeps the position, the other person he keeps the position, but he will be charging something for you, okay, something on behalf of this keeping the position, so he is taking charge for that, okay, but he is taking charge for that, okay, जब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपका पोजीशन नहीं देगा। सो फॉर एग्जांपल क्लोक रूम, फॉर एग्जांपल क्लोक रूम, क्लोक रूम आपने देखे होंगे कई कई धार्मिक जगह पे, और कई एयरपोर्ट्स में भी होते हैं, रेलवे स्टेशन में भी होते हैं, और कई सारी जगह पे क्लोक रूम होते हैं जहाँ पे यू कीप योर बैग्स, लगेजेस, एंड ऑन लीव ऑफ दैट दे विल चार्ज यू अ स्मॉल मनी, स्मॉल चार्ज, थोड़े पैसे लेते हैं आपसे। ठीक है, सो एक बार सामान दे दिया, सो once you have given the possession, 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 then आप उसे नहीं ले सकते जब तक आप उसके पैसे नहीं दोगे, है ना। तो एक बार सामान दे दिया तो पैसे दो और फिर सामान ले लो। then once you have given the possession, then you cannot take it back unless you give a charge। ठीक है, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपका पोजीशन नहीं देगा। सो इन दिस केस ऑल्सो देयर वाज अ एब्डिकेशन ऑफ पोजीशन, इन दिस केस ऑल्सो there was abdication of possession, so in this case also there was abdication of possession कि आपने अपना पोजीशन छोड़ दिया। ठीक है, ऑलराइट। और नेक्स्ट इसमें कि जैसे मान लो यू हैव गिवन पोजीशन बट नो चार्ज, you have given up possession, given up your possession, you have given up your possession but no charge, बट वो चार्ज नहीं करते आपसे, बट
इसमें वो है आपको कोई टोकन वगैरह देते हैं, ठीक है, इसमें आपने यू हैव गिवन द पोजीशन बट नो चार्ज इज बीइंग टेकन, ओके, नो चार्ज इज टेकन, आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी बैक अनलेस यू शो सम काइंड ऑफ टोकन, है ना, बट स्टिल you cannot you cannot take back your property unless unless you show unless you show some token, ठीक है, आप कोई टोकन दिखा के वो प्रॉपर्टी ले सकते हो, ऑलराइट, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप किसी टेंपल में जाते हो, टेंपल या गुरुद्वारा या एयरपोर्ट व्हाट एवर इट इज, अब मान लो टेंपल में गए तो टेंपल के बाहर यू कीप योर शूज आउटसाइड, यू कीप योर शूज और स्लीपर आउटसाइड, ठीक है, तो वहां पे जो शू कीपर है वो आपको एक टोकन देगा, ही विल गिव यू अ टोकन एंड आफ्टर शोइंग दैट टोकन बैक तभी आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, यू विल गेट योर शूज रिटर्न, सो दिस इज आल्सो एब्डिकेशन ऑफ पोजेशन, दिस इज आल्सो एंट्रस्टमेंट, तो इसे भी एंट्रस्टमेंट बोलते हैं। अब मान लो एयरपोर्ट है तो जो सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है, सो इन सिक्योरिटी चेक, इन सिक्योरिटी चेक आप एक ट्रे में अपना सामान रख देते हो, ओके, और यहाँ से आप जो है सिक्योरिटी चेक से जाते हो, फ्रिस्किंग होती है और आपकी ट्रे यहाँ से बाहर आ जाती है, आपको एक टोकन दिया जाता है और यहाँ आके आप वो टोकन दिखाते हो, देन यू विल गेट योर प्रॉपर्टी बैक, ओके, so this is also abdication of possession, okay, so here obviously you have abdicated your possession, main thing is the abdication of possession, so here also you have abdicated the property, ठीक है, एंड यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ओवर हेयर देयर कैन बी breach of trust breach of trust there can be breach of trust, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने सामान रखा, फॉर एग्जाम्पल यू कीप यू यू कीप योर लगेज या बैग्स जो भी है वॉट एवर इट इज बैग्स, ठीक है, यू कीप योर लगेज और बैग्स फॉर 2 days and after 2 days your bags is missing bags are missing, so after 2 days your bags are missing, so this is breach of trust, so this is breach of trust, ठीक है, ऑलराइट, तो मेन थिंग इज एंट्रस्टमेंट, कि आपने उसको ट्रस्ट करके आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, और आपने अपना पोजीशन छोड़ दिया, you do not have a direct possession or you do not have a constructive possession, so main thing is कि there was entrustment and no direct possession nor constructive possession, ठीक है, all right, is it okay, is it clear to all of you, please tell me, because now I'm going to give you an example, please tell me that all of you have been please tell me that आप सबको समझ में आ गया, because now I'm going to give you few examples,
आराधना, भारत, कृष्णा, निधि, प्राची, शिवम, प्लीज टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ? अभी तक कोई डाउट? Yes, I will be giving example of constructive possession also, don't worry. Okay, but अभी तक किसी को कोई डाउट till now? Do you have any one of you is having any doubt? Please ask me. No doubt. Okay, very good. ठीक है, अब मान लो सपोज, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल सपोज कि मैंने कहा कि मेरी वॉच रख लो. सपोज आई सेड कीप माय वॉच. मैंने आपको बोला कि मेरी वॉच रख लो. ठीक है, एंड कल आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, एंड tomorrow I will take it back from you. ठीक है, मैंने कहा कि आप मेरी वॉच रख लो एंड कल को टुमारो आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू. ठीक है, देन नेक्स्ट डे मैं आया. नेक्स्ट डे when I came I asked about my watch. I asked you about my watch. You said which watch? कौन सी वॉच? ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मेरी वॉच दो, आप बोल रहे कौन सी वॉच. मैंने कहा, आपने कहा कि कौन सी वॉच. सो इफ यू से दैट आई हैव रिटेन्ड माय कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, देन इट इज थेफ्ट. तो अगर मैं बोलूं, सो इफ आई से दैट आई हैव retained my constructive possession. I have retained my constructive possession. If I say that I have retained my constructive possession, then it will be theft. It will be theft. However, if I say that I do not have a constructive possession, then in that case it will be the breach of trust. ठीक है, but if I say, मैं ये भी लिख देता हूँ, but if I say that I have abdicated the possession, then it is a case of criminal breach of trust. ठीक है, सो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा. एवरी टाइम यू हैव टू एग्जामिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. सो एवरी टाइम आपको हर वक्त एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्स है, क्या सर्कमस्टांस है. ठीक है, सो एवरी टाइम you have to examine the facts and circumstances. So every time you have to examine the facts and circumstances. So आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा, why did you give him, why did you give, for how long you give, for how long, कितने टाइम के लिए दिया था आपने, for how long you give. Okay, so were you present there, क्या वहीं पे थे, were you present there. ठीक है, तो क्या वहीं थे या नहीं थे. तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे while examining that whether you have abdicated the possession or not. Okay, all right, let me give you another example. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लो सपोज कि I gave you my watch. ठीक है, मैंने आपको अपनी घड़ी दी and I left from there.
मैंने आपको अपनी घड़ी दी और मैं चला गया वहां से, ठीक है। सो आई हैव नो मोर कंट्रोल, सो आई हैव no more control over the watch, over the watch. It is faith. मैंने faith से आपको अपनी वॉच दी, ट्रस्ट करके दिया. It is a faith relation. It is a relation of faith. It is a relation of faith. Out of faith मैंने आपको अपनी वॉच दी, and whenever I want I can have it back, ठीक है. And whenever I want I can have it back, and whenever I want I can have it back. So here it is entrustment. So here it is entrustment. So here it is entrustment. Okay. All right, everyone. So this is the entrustment. Okay. एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. Let me give you another example. Okay. For example, suppose A is at railway station. A is at railway station. Okay. A is at railway station and he is having a briefcase. Having a briefcase and suitcase and bag, little. Having a briefcase and bag. Okay. Now chor aya B. B. He is a thief. Okay. चोर आया and briefcase लेके भागने लगा. He took the briefcase and started running. Okay. All right, guys. What I'm going to do is I'm providing you a new meeting link because this session is going to expire. Okay. Just wait for 1 more minute. I'm providing you the new link. Over there, I will be discussing this example. Okay. I will be discussing this example over there. Just wait for 1 more minute.